करेंगे आज कंपैरिजन टेस्ट we compare a series with some other series जिसके बारे में हमें information है कि whether it converges or diverges and then you deduce some conclusion from that. जिन्होंने कैमरा ऑन की थी वो जरा बंद ही रखो अब, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है, वैसे भी मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन दूसरा ये है कि इंटरनेट स्पीड से उस पर फर्क पड़ता है. ओके, सो लेट मी दिस पेन. तो पहला जो हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे वो सीधा ही है, हाउ अबाउट द टर्म्स ऑफ द सीरीज. यानी अगर मैं लूं ये पहला वाला टेस्ट बड़ा सिंपल है, वी कॉल इट कंपैरिजन टेस्ट. और ये भी जो ये टेस्ट्स हैं ये हम कर रहे हैं, ये भी जो कंपैरिजन टेस्ट हैं दे आर फॉर सीक्वेंसेस जिनकी सारी या सीरीज जिनकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है. So what is this test? Now it says that if I have got summation n runs from 1 to infinity, and summation n runs from 1 to infinity, these are two series such that मुझे देखना चाहिए था positive terms, positive numbers, whatever, such that we can find a positive integer. Yeah, there exists some k positive such that a n is less than equal to k times bn for all n bigger than equal to m for some m belonging to the set of natural numbers. यानी एक स्टेज के बाद दिस सीरीज जो pn's की सीरीज है उसकी जो टर्म्स है वो डोमिनेट करती हैं, वो इससे बड़े होते हैं, मतलब plus some was multiplied by some constant. तो अगर ऐसा होता है, but this has to be some fixed number, तो then अगर ये सीरीज समेशन bn कन्वर्ज करती है तो पहला कंक्लूजन है हमारा, if summation n runs from 1 to, I should write bn infinity converges, अगर ये कन्वर्ज करती है then summation n runs from infinity also converges. Second, if summation n runs from 1 to infinity an diverges, then summation n runs from 1 to infinity bn also diverges. देखो पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है उसमें एक हमें हमेशा फायदा होता है, वो क्या कि अगर सीरीज की टर्म्स पॉजिटिव है तो मेरा जो s1 है वो होता है a1, यू नो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म्स. सो इट मीन्स दैट अगर ये पॉजिटिव है सभी तो s3 would be a1 plus a2 plus a3. अगर मैं पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ तो इसका मतलब s1 is less than equal to s2 is less than equal to s3. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए इट वुड बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और हमें पता है अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो दैट वुड कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड. तो अगर हम दिखा दें, इसका फायदा ये है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं इट इज सफिशिएंट टू शो दैट the sequence of partial sums is bounded by some number m, जो मैं यहाँ लिखूंगा. तो अगर हमने दिखा दिया इट्स बाउंडेड इट कन्वर्जेस, और अगर दिखा दिया इट इज अनबाउंडेड तो इट विल डाइवर्ज. सो दैट्स द व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ज्यादा कुछ है नहीं. प्रूफ. सो लेट Sn be the nth partial sum of our first series, that is ai's की जो सीरीज है, and Tn be the nth partial sum of, let's call it p1 plus p2 plus up to pn. तो अगर ऐसा है then for all n bigger than equal to m कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, तो अगर इससे n आगे बढ़ा है तो इट मींस Sn माइनस Sm बराबर होगा
what Sn में से हमने Sm निकाले तो बचेगा an+1 plus an+2 so on and so मैंने गलत लिख दिया a m बाहर निकाले तो बचेगा क्या m+1 onwards so it should be m+1 plus am+2 up to an लेकिन हमें पता है m onwards ये inequality true wherever assumption इसका मतलब ये होगा this should be less than equal to k times bm plus 1 plus k times bm plus 2 so on and so forth plus same k times bm bn but this is equal to k times bm plus 1 but that is the same thing as tn minus tm right so that would imply that Sn जो है after this stage should be less than equal to k times Tn plus Sm इसको मैंने यहाँ shift किया minus k times Tm तो मैंने इसको थोड़ा rearrange किया which implies that Sn is less than equal to k times T sub n plus some h चलो next page पे देखते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Sn is less than equal to Tn plus of course k यहाँ पे है plus h where h is some fixed number fixed positive number that is Sm minus k times Tm fixed positive number यहाँ मैं लिख सकता हूँ for all जो हम पहले लिखा था ऊपर this is true for all n bigger than equal to this fixed integer m now suppose that summation bn n runs from 1 to infinity converges it implies that tn की sequence जो है is bounded above so it implies that Tn जो है that is less than equal to p less than equal to p for all n for some b positive लेकिन that implies उसका मतलब ये हुआ कि Sn is less than equal to kb plus h for all n greater than equal to m right which implies that अब देखो n onward से bounded है so it means that Sn is less than equal to I can write it as maximum of the set I'd say S1 up to Sn minus 1 or of course k b plus h or of course if finite set का maximum है so it would be some number or this would be for all n which implies that Sn जो है and runs from 1 to infinity is bounded above or चूंकि ये sequence of positive terms है so it implies that जो है summation an and runs from n to infinity converges okay so दूसरा है मतलब इसका उल्टा तो अगर now suppose that इसका नाम कुछ देते हैं let's call this okay now suppose that इसका उल्टा suppose that ये जो छोटी वाली सीरीज है यानी कौन सी सीरीज summation an runs from 1 to infinity diverges it implies that Sn and runs from 1 to infinity is not bounded above which would imply that for any positive number g howsoever large
there exists some m naught belonging to the set of natural numbers such that Sn is bigger than g for all n greater than equal to m naught. After the certain stage किसी भी number से बड़ी हो जाएगी because it's not bounded above. So therefore from 1 for all n bigger than equal to maximum of m and m naught, यानी वो m naught से भी बड़ा है और m से भी बड़ा है. In that case our inequality 1 is valid and this is also valid. दोनों ही valid है. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब Tn is equal to must be bigger than equal to greater than equal to 1 by k into g minus h for all n bigger than equal to this, which implies that the n जो है is not counted above. After a certain stage it becomes very large, counted above, which implies that summation bn diverges, is divergent. So basically हमने जो इसमें देखा कि अगर तुम्हारे पास इस तरह की इक्वेशन है after a certain stage for some n bigger than equal to m where a n भी पॉजिटिव है b n भी पॉजिटिव है, अगर ये वाली सीरीज बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी यानी जो राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी छोटी वाली सीरीज तो ये बड़ी जो उससे वो भी जाहिर सी बात है उससे बड़ी होगी because we are talking about sequence of positive terms. ठीक है. ओके इसी का एक लिमिट फॉर्म है, मतलब हम इसको इन द लिमिट भी सोच सकते हैं कि जैसे हाँ इसी को चलो लिखते हैं उसको इसी टेस्ट का एक लिमिट फॉर्म. सो इसको भी चलो कंपैरिजन टेस्ट ही लिखते हैं. कंपैरिजन टेस्ट 2, ये बहुत सारे कंपैरिजन टेस्ट हैं व्हिच आर एसेंशियली द सेम. कंपैरिजन टेस्ट नंबर 2. चलो अगर हम if फिर से वही है, if summation a n runs from 1 to infinity, summation n runs from infinity bn are two series of positive terms. Now that will be important again. And summation limit n approaches infinity, an divided by bn is equal to l. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है if L is non-zero and finite, तो ये non-zero है और finite है, then summation a n runs from infinity a n and summation n runs from infinity b n converge and diverge together. अगर ऐसा होगा, let's call this one. मेरे कहने का मतलब L है फाइनाइट है नॉन जीरो, अगर फिर an कन्वर्ज करेगी तो bn कन्वर्ज करेगी, bn कन्वर्ज करेगी तो an कन्वर्ज करेगी, अगर an डाइवर्ज करेगी तो bn डाइवर्ज करेगी, बिल्कुल they will behave together, मतलब the same. Now if L is zero, अगर L zero है, अगर L zero है तो क्या होगा? Then if bn converges summation an and runs from infinity also converges. ठीक है. और of course third इसका हो सकता है, suppose if L is infinity, मुझे याद नहीं क्या होगा जरा, अगर L infinity होता है तो इसका मतलब डोमिनेट कौन करेगा? डिनोमिनेटर. यस तो ठीक है. अगर ये इंफिनिटी हुआ तो उसका उल्टा हो जाएगा. इट मींस इफ, लगता है वो हम देखेंगे जब प्रूव करेंगे. I think I should write if summation n runs from to infinity
Then converge an diverges. Let me write it. Then summation an runs from infinity bn also diverges. वैसे भी हम जब प्रूव करेंगे तब क्लियर हो जाएगा. अभी मैं थोड़ा ऐसे ही इजी देख रहा हूँ. Anyways, proof. पहली बात तो ये अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये लिमिट भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? So now L is positive, so we can choose, you know, 0 less than epsilon less than L. Between two numbers, I can choose another third number, which implies that L minus epsilon is a positive number, right? Now, also, by the definition of the limit, also since limit n approaches infinity, an by bn is equal to L. It implies that for any epsilon positive, there exists some natural number, let's call it m, such that modulus of an by bn minus L is less than epsilon for all n bigger than or equal to m. It's just the definition of the limit, which implies that an by bn it would be less than L plus epsilon bigger than L minus epsilon for all n greater than or equal to m, which implies that an it would be less than L plus epsilon times Bn for all n greater than or equal to m. It's a situation like an is less than some k. Now call this k for all n bigger than or equal to m, where k is sum of two positive numbers, therefore positive. So therefore by previous test जो हमने किया था, comparison test, if summation bn and runs from 1 to infinity converges, if summation bn converges, then summation an also converges. And if summation an and runs from 1 to infinity diverges, then summation bn and runs from 1 to infinity also diverges. ये हमारा पुराना ही टेस्ट है. Also, अभी तक हमने ये वाला इनइक्वालिटी का हिस्सा यूज किया. अगर मैं ये यूज करूं, so also bn is less than 1 by L minus epsilon times an for all n bigger than or equal to m. तो इसको मैं मान सकता हूँ k dash, which is a positive number, where of course k dash is equal to 1 by L minus epsilon, which is positive. So therefore, if summation an runs from 1 to infinity converges, by previous test, summation bn also n runs from 1 to infinity also converges. And it's if summation bn diverges, then summation an n runs from 1 to infinity also diverges. In short, इस सिंबल में कि summation an runs from 1 to infinity and summation bn runs from 1 to infinity. क्या होगा इसका मतलब? Of course, they behave, similar. अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी डाइवर्ज, दोनों बातों को मिला के. Now, in case L is equal to 0, then I can say that L को अगर मैं 0 लगा दूं, क्या मिलेगा मुझे? I would have this thing. What?
I've got limit n approaches infinity, an bn is equal to 0, which implies that for any epsilon positive, जैसे कि हम करते हैं, there exists m belonging to the set of natural numbers such that an minus bn minus 0 is less than epsilon. और चूंकि ये पॉजिटिव है और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब an is less than epsilon times bn, where epsilon is of course positive number, which implies that if summation bn and runs from 1 to infinity, यहाँ मैं rule again जो हमने पहला टेस्ट किया है वो कहता है if summation bn converges, then summation an must also converge. और in case जो तीसरा केस था अपना, सेकंड मैंने उसका नाम दिया था जो भी है, but you understand, in case l is equal to infinity, then limit n approaches infinity, an by bn is equal to infinity. What does that mean? अगर कोई infinity हो रहा है तो after a certain stage it can become any bigger than any number. Now for any number k positive, because everything is positive here, there exists an m belonging to the set of natural numbers such that an by bn is bigger than m for all n greater than equal to small m. तो मुझे ये मिला कि an by bn is bigger than some positive number, any positive number जो भी आप fix करना चाहो, for all n greater than equal to m, which implies that bn is less than 1 by m times an for all n greater than equal to m, which implies that if summation bn, इससे पहले क्या था, converge करती है, बिल्कुल यहाँ diverge होगा, if summation bn diverges, then summation an will also diverge. मैंने थ्योरी में ही लिखा था, तो देखता हूँ, if summation an also diverges. ठीक है, ठीक है, ओके. So once, so ये भी हमने, ये भी एक comparison test है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये straightforward बात है. But there is another interesting one. Again, it's another comparison test 3 में इसको लिखता हूँ. ये थोड़ा ratios को देखता है. Comparison test 3rd. Now again summation an here, let summation an runs from 1 to infinity and summation bn runs from 1 to infinity is a series of positive terms and अगर इनका ratio an divided by an plus 1 is greater than equal to, क्या मुझे लिखना चाहिए, there exists some positive integer या natural number m such that an divided by an plus 1 is bigger than equal to bn divided by bn plus 1 for all n greater than equal to some fixed number. Then summation an runs from 1 to infinity converges if summation bn runs from 1 to infinity converges, and summation bn runs from 1 to infinity diverges if summation bn runs from 1 to infinity diverges. ये पहले जैसा ही है, इसमें कुछ खास डिफरेंट नहीं है, फिर भी हम इसको करेंगे. सो इसको अगर हम दिखाएंगे
Now the solution here, proof is test का case सही बोल रहा है. Now let Sn be the nth partial sum of our first series of non-negative terms, and Tn be equal to P1 plus P2 plus so on and so forth to Pn. And then for all n bigger than equal to m, I have got, it is given that an divided by an plus 1 is bigger than equal to Pn divided by Pn plus 1. It implies that what? Okay, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, therefore am divided by an can be written as am divided by am plus 1, am plus 1 divided by am plus 2, क्योंकि ये कैंसिल होगा आपस में. इसी तरह से am plus 2, क्योंकि m n से छोटा है तो मैं n तक जाऊंगा, am plus 3, so on and so forth, and I should reach a stage an minus 1 divided by an, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल होगा तो बचेगा am by an. But this is greater than equal to, और सारे की सारी terms positive है, because m onwards this is true. So m onwards means this should be bigger than or equal to bm divided by bm plus 1, bm plus 1 divided by bm plus 2, so on and so forth, bn minus 1 by bn, which is the same as m by bn. And you have to remember this m is fixed and n is the general index. So it implies that an is less than equal to am by pm into pn for all n greater than equal to m. Now since वही reason, since m is fixed, implies that am by bm is a fixed positive number. फिर से वही बात होगी, क्या मतलब, it is an is less than equal to some k times bm, so which implies that कि अगर bn converge करता है तो an converge करेगा, और अगर an diverge करता है तो b, वो तुम खुद लिखोगे इससे आगे. आर्गुमेंट वही है. और therefore by comparison test 1 जो हमने किया था, चलो मैं लिख देता हूँ. By comparison test 1, if summation Pn n runs from 1 to infinity converges, then summation Pn converges. Okay, now add if summation Pn diverges, then summation Pn n runs from 1 to infinity diverges. Okay. So let's leave it there. तो हम कुछ examples करते हैं. इस comparison test जो भी हमने किए, essentially एक ही idea है. अगर तुम देखोगे एक ही चीज हो रही है, after a certain stage one series dominates other. वो सच है तो फिर उससे मतलब है, अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, और अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी. जैसे हम ये दिखा सकते हैं इससे, summation 1 by n factorial and runs from 1 to infinity is convergent. इसको कंपेयर कर सकते हैं ऐसे कि 1 is equal to 1, इश्यूज ठीक है. Now 1 by 2 factorial is also equal to 1 by 2, right? नहीं, 2 factorial का मतलब है ना पता, 2 into 1, so it is the same thing as 1 by 2. लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूं 1 by 3 factorial किसके बराबर is 1 by 6, right? But that is surely less than 1 by 2 square, because 4 is less than 6, so 1 by 6 is less than 1 by 4. इसी तरह से 1 by 4 factorial किसके बराबर है? 1 by 24. But that is surely less than 1 by 2 cube, because 8 is less than 24. So so on and so forth, I can see that in general, 1 by n is less than 1 by 2 raised to power n minus 1.
right? Oh, all right. ठीक है ना? So if a n को अगर मैं नाम दूं 1 by n factorial, b n को नाम दूं 1 by 2 raised to power n minus 1, I see that 1 by n factorial is strictly less than so 2 raised to power n n है n minus 1 नहीं होना चाहिए, इससे कम है ना, 1 है 2 है 2 है 3, ठीक है. For all n bigger than equal to 3 onwards ये inequality true है. So which implies that a n is less than pn for all n bigger than equal to 3. यहाँ हम k के लिए 1 यूज कर सकते हैं. एंड अब अगर मतलब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी. Now summation 1 by 2 raised to power n minus 1 n runs from 1 to infinity that's equal to summation bn. या इसी तरह से लिख लो, is a geometric series of common ratio less than 1, ratio 1 by 2 which is less than 1. So therefore it must converge. Geometric series converges if its common ratio is less than 1. So therefore summation 1 by 2 raised to power n minus 1 n runs from 1 to infinity converges, and therefore by comparison test इसकी जो छोटी सी जो होगी इससे हमें जो दिखी summation 1 by n factorial n runs from 1 to infinity also converges. Now there is another thing जो हम comparison से कर सकते हैं, जैसे ये जो मैंने तुम्हें कहा था एक्चुअली summation n runs from 2 to infinity for what values of p, चलो मैं अब लिख ही देता हूँ, log n raised to power p, it diverges for all p belonging to r. कोई भी p ले लो. अब उसके लिए हम ये यूज करेंगे, चलो मैं मतलब for this, चलो ये और भी जगह तुम्हें काम आएगा. For this we use the following lemma. Following lemma हम यूज करेंगे कि for any r positive k positive, दो पॉजिटिव नंबर है, लिमिट x approaches infinity, ये तुम किसी और जगह भी यूज करोगे, बहुत जगह यूज होगा ये. Divided raised to power k, अगर k और a r positive है, x raised to power r is always equal to 0. तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस लेमा के लिए, now let y equal to log of x raised to power r, which implies that y is then by the rules of the logarithm, it is equal to r, ठीक है, log of x, और इसको फर्दर मैं कर सकता हूँ कि y by r is equal to log of x implies that e raised to power y by r is equal to x, applying exponential on both sides. So therefore log x raised to power k divided by x raised to power r is equal to log x is y by r raised to power k, or x is e raised to power y by r whole raised to power r. Now that is nothing but y raised to power k divided by e raised to power y, I think. लेकिन यहाँ बचेगा divided by r raised to power k, that is equal to 1 by r raised to power k, r raised to power k into y raised to power k divided by e raised to power y. So मुझे मिला, by this substitution log of x, ये लिख नहीं रहा है ठीक से, log of x raised to power k, where k is positive and r is positive, can be written as
1 by r raised to power k e raised to power x raised to power k, मैंने गलत लिखा, substitution की थी, इसकी जगह y, so it is y raised to power k divided by e raised to power y. Now मैंने substitution क्या किया था, y is equal to log of x raised to power r, which is the same thing as r into log of x. Now as x approaches infinity, log of x approaches infinity, and चूंकि r positive है, y approaches infinity as r is positive. So therefore I can say limit x approaches infinity, log x raised to power k divided by x raised to power r, right, is equal to 1 by limit y approaches infinity. X approaches infinity, y approaches infinity, 1 by r raised to power k, y raised to power k, e raised to power y. That would be 1 by r raised to power k, और ये याद रखना ये positive है, so it will be y raised to power k, e raised to power y. अब जाहिर सी बात है, इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि ऊपर भी इंफिनिटी होगा, e raised to, आप l'Hopital's रूल करोगे तो y का पावर कम होता होता जाएगा और वो डिनोमिनेटर में आएगा, और e raised पर y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दिस शुड बी 0. So therefore this is 0. So having done this lemma, मतलब जब भी तुम्हें कोई पावर दिखे ऊपर और नीचे एक्सपोनेंशियल, तो उसका मतलब है कि जब हम l'Hopital's रूल लगाएंगे, ऊपर वाला पावर कम होते होते डिनोमिनेटर में नेगेटिव बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसका मतलब फिर डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से e raised power y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is now what I have. So therefore I can say limit n approaches infinity, log n raised to power p divided by n is equal to 0. क्योंकि यहाँ p for p positive, क्योंकि अगर p positive है, n का पावर क्या है, n का पावर p 1 है, मैंने n की जगह x लिखा, p अगर पॉजिटिव है, so then this should always be the case, right? अब अगर p नेगेटिव है तब तो बहुत ही इजी है, right? तो and if p is 0 फिर तो है, no anything raised power, and also limit n approaches infinity, log n